BYJU'S exam prep. I'm Nivedita Raje, and today we are going to learn how to prepare revision notes or notes for revision. जैसे कि उस पे हेडिंग पड़ी हुई है रिविजन नोट्स कैसे बनाएं, तो आज हम यही समझेंगे कि रिविजन के नोट्स कैसे बनाए जा सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे ये सवाल पूछ सकते हैं कि मैम वी हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड नोट्स, डू यू वांट अस टू प्रिपेयर नोट्स फ्रॉम द स्क्रैच, लाइक so close to the examination, what do we do with the notes that are already there? एक्चुअली ऐसा होता है कि रिविजन के दौरान भी आप बहुत कुछ करते हैं। यू गो थ्रू द नोट्स दैट आर देयर ऑलरेडी, देन यू वॉच द वीडियोज और द क्लासेस दैट आर गोइंग ऑन, यू टेक रेफरेंसेस फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस। अब ये सारा मटेरियल जो आप लास्ट मिनट पे पढ़ते हैं, ये सब दिमाग में स्टोर नहीं हो पाता, और स्टोर अगर हो भी जाता है तो याद नहीं रहता। You cannot remember each and everything that you do. And revision also requires a lot of preparation, a lot of study. If you're revising, it means that you are watching videos, you are referring to various sources, you're doing a lot of things, right? So now when you're doing all those things, it is not possible that you read it and then you remember it for the rest of the life. No, not everybody is Sheldon Cooper, right? So while revising, if you happen to come across anything that you might not have studied before, or something that you feel is worth remembering because from an exam point of view, it is important, then you immediately write it down. और उसी को हम रिविजन नोट्स कहते हैं। बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जब आप अपनी प्रिपरेशन को फाइनल टच दे रहे होते हैं, तब आपके अपने नोट्स और रिवीजन के नोट्स मिला के आपका प्रॉपर स्टडी मटेरियल कंप्राइज करते हैं। ठीक है। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? वेलकम एवरीवन। सो let us begin. So the first thing that you need to do is how to revise efficiently. Efficiently, you can revise through notes. There's no other way. For competitive exams like CLAT, there are two ways of revision. पहला तरीका तो यही है कि आप अपने नोट्स को पढ़ें, ठीक है, और साथ साथ में रिविजन नोट्स को बना सकें। रिविजन नोट्स वो आखिरी के वीक के लिए होते हैं। ऑर्डिनरीली आप वही नोट्स रेफर करते हैं जो आपने बनाए हैं। ऑल द नोट्स दैट यू हैव प्रिपेयर्ड थ्रू आउट योर प्रिपरेशन आर व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी। But when the last time comes, the last remaining week where everybody is panicked to the peak, there the revision notes play a significant role, because then you don't have time to go through hefty, bulky material. You need something short, precise, and there your revision notes come very handy. उस टाइम के लिए रिविजन नोट्स बहुत काम आते हैं। ठीक है, तो खुशी, रिविजन करने का यही तरीका है कि आप अपने प्रिपरेटरी नोट्स को एक बार अच्छे से पढ़ डालें, साथ में जो भी आप कर रहे हैं उनको छोटा छोटा छोटा, जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगी रिविजन नोट्स बनाने की, उसको फॉलो करें। रिविजन नोट्स बनाते रहें। आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके सबकॉन्शियस में वो चीजें स्टोर होने लगेंगी इफ यू आर राइटिंग देम डाउन एज योर रिविजन नोट्स। And practice. Keep taking sectional tests, keep taking mock tests. That's the way to revise in the most efficient manner. If you're following another path, do let me know, because this is what I think to be the best way forward. Okay. How to cover backlogs of GK. Backlog are causing problems for me. Devdrita, backlogs can be covered by a compendium. There's no other way. You cannot go over to refer every single newspaper that was there before you started reading, right? तो बैकलॉग को कवर करने का यही तरीका है कि आप एक एनुअल मैगजीन उठा लीजिए, ठीक है, एनी एनुअल मैगजीन दैट यू फाइंड कंफर्टेबल, यू फाइंड understandable, something that you find interesting. So take about 2 magazines if you can finish 2. If you find it difficult to finish 2 magazines, take 1, but it should be a 1-year complete package. Like, it should be exhaustive, should contain as much information as possible. Do not take a magazine which has factual statements like this happened, this happened, this happened. You can read it n number of times, you won't be able to remember a single thing. 10 बार 15 बार पढ़ लो उस मैगजीन को, कुछ नहीं याद रहेगा तुम्हें। सबसे अच्छा तरीका होता है कोई ऐसी मैगजीन खरीदे जो आपको सेगमेंट के बारे में सिर्फ बता नहीं रहा, उसकी थोड़ी बहुत बैकग्राउंड स्टोरी भी बता रहा है। यही मैगजीन आपको रिटेन करने में हेल्प करती है, वरना सारी मैगजीन्स बहुत सारी घास सी काट देती हैं। दे गिव यू एटलीस्ट 10,000 फैक्ट्स, कितने याद रख लोगे? नहीं याद रख पाओगे। ठीक है, तो थोड़ा सा
कोई भी मैगजीन जिसमें थोड़ा सा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे रखी है किसी भी हैपनिंग को लेकर, करंट और इंटरनेशनल, सॉरी नेशनल और इंटरनेशनल, उस तरह की मैगजीन को उठाइए। बहुत सारी मैगजीन्स इस तरह की, दृष्टि इज नॉट बैड बट इट इज नॉट एग्जॉस्टिव, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं होती। प्रतियोगिता दर्पण भी अच्छी है, उसमें भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। तो आप दृष्टि और प्रतियोगिता दर्पण को वो कर लीजिए, साथ ही ले लीजिए, पुराना पीछे सब पढ़ डालिए, हो जाएगा आपका बैकलॉग कवर। CLAT Ignite is not an annual magazine. CLAT Ignite is a monthly magazine. We are yet to release CLAT annual, Ignite annual. तो जब तक CLAT Ignite annual नहीं आता, you have to rely on foreign sources. Okay? नहीं, late नहीं हुए. Yes. So the first way or the first thing that you do while making the notes, especially your revision notes, is to make sure that they're concise. Mind you guys, you're not preparing full-fledged notes again. You do not need 100 notebooks of one topic. No. You are not remaking the notes. You're not doing it all over again. पूरी drill जो तुम साल भर से कर रहे हो वो शुरू से नहीं करनी है, तुम्हें रिविजन करना है। और रिविजन के लिए आप जितना प्रिसाइज और कंसाइज हो सके उतना कंसाइज होना जरूरी है। ठीक है, तो मेक श्योर दैट योर नोट्स आर एक्सट्रीमली कंसाइज, यू आर राइटिंग इंफॉर्मेशन इन द मिनिमलिस्टिक, यूजिंग मिनिमम वर्ड्स पॉसिबल। पैराफ्रेज भी अगर कर रहे हो, रीराइट कर रहे हो, तो कोशिश करो कम से कम वर्ड्स को यूज करने की। अगर तुम रीराइट कर देते हो, पूरा का पूरा मटेरियल तुमने पढ़ा और तुमने देख देख के वापस लिख दिया, तो यू आर जस्ट प्रैक्टिसिंग राइटिंग एंड हैंड राइटिंग, यू आर नॉट रिमेम्बरिंग एनीथिंग एंड दोज आर नॉट योर नोट्स। ठीक है, आपने पढ़ा, आपने समझ लिया, आपने रिटेन कर लिया, और फिर आपने सोचा कि इसको 2 लाइन में मैं कैसे समझ सकता हूँ, और जो तुम्हें समझ आया उसको तुमने 2 लाइन्स में लिख लिया, वो हो गए कंसाइज नोट्स तुम्हारे। These are called concise notes and these are what you will use for रिविजन। रिविजन के टाइम पे अगर आप पूरी पूरी मॉड्यूल्स उठा लेंगे, अपने मोटे मोटे नोट्स, बायजूस का स्टडी मटेरियल, whatever you have prepared all through your preparation, if you start referring to that, it will panic you more because it's too much. Syllabus is not that, less, it's pretty hefty. So you need to structure it and make sure that it has reduced, it contains all the information but it contains it in a precise form. वो बैग्स नहीं आते हैं जिनमें बड़ी बड़ी रजाइयां रख दी जाती हैं और फिर उनसे उनसे एयर निकाल दी जाती है। ठीक है, वैक्यूम बैग्स जो होते हैं, एयर निकाल दी जाती है, जहाँ पे इतने बड़े क्विल्ट हैं, वो एयर निकालने के बाद इतने से हो जाते हैं और जरा सी जगह में आ जाते हैं। यही रिवीजन नोट्स में करना है आपको, एयर निकाल देनी है सारी, मतलब ऑल द इरेलेवेंट इंफॉर्मेशन और ऑल द इंफॉर्मेशन दैट्स वेरी इजी टू रिमेम्बर, यू डोंट हैव टू राइट इट डाउन, everything that you can shave out, the most relevant part in 1 words, 2 words, maximum 2 lines, just write that down, and that's how you will start preparing your notes. And this should happen whenever you are studying. आप कोई लेक्चर ले रहे हैं, आप कोई सेशन अटेंड कर रहे हैं, चाहे वो पेड है चाहे वो यूट्यूब पे है, if you're watching sessions on YouTube, BYJU'S, or whatever source you're referring to, or if there any other platform that you are going for, just make sure that you're writing things down in your own language. Vicky, can you really finish a magazine in 2 days? How efficiently can you do it? Magazine छोटी तो है नहीं, it's not a magazine which with 4-5 pages, it's a thick magazine. तो अगर आप कर भी रहे हैं ऐसा, if you are able to do it, hats off to you buddy, but make sure that you are writing stuff down, okay, because where you would have to revise all of it. सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं होता, कंपटीशन की होती है रिवीजन। आप पढ़ लीजिए पूरे साल, जी लगा के मेहनत कर लीजिए, do whatever you can, just work your you know knees off, be the most hard worker ever, but if you don't revise all that you did, the preparation is practically a waste. So make sure that you are revising things. Okay, so even if you are finishing one magazine in 2 days, make sure that you are making notes while doing it, and you can revise those notes after you are done with all the magazines. Okay, Vicky. What should you do for your critical reasoning? Rashmi, as much as I love to help you in all the subjects, I cannot.
Critical reasoning is not my expertise. You would have to talk to your respective faculty. हाउ टू कवर मैगजीन पढ़ के खुशी. अगर देखो तुम बच्चे ना बहुत अच्छे से समझ लो, ऑल द स्टूडेंट्स आर लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स बिकॉज यू डिड नॉट प्रिपेयर ऑन टाइम. तुमने तैयारी टाइम से नहीं शुरू करी, अभी 50 दिन रह गए, तो तुम्हें लगता है मैम तुम्हें कोई जादू की घुट्टी दे देंगी जैसे पीकर तुम अचानक से कर लोगे सब कुछ. नहीं, मैगजीन को कैसे कवर करोगे? पढ़ के कवर करोगे. पढ़ो उसे, ठीक है, पढ़ो उसे. अगर 250 पेजेस की मैगजीन है तो तुम देखो कि तुम्हारी कैपेबिलिटी क्या है, कितने एक दिन में कितने पेजेस पढ़ सकते हो और कितने पेजेस पढ़ के याद रख सकते हो. उतने पेजेस पढ़ डालो और डिवाइड कर लो कि भाई इतने दिन में मुझे मैगजीन खत्म करनी है. 250 पेजेस की मैगजीन है, 50 दिन है तुम्हारे पास, इसमें तुम्हें सब करना है, बाकी भी सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना है. सो डिवाइड 15 पेजेस हो सकते हैं एक दिन में. आई डोंट थिंक दैट्स अ वेरी बैड और दैट्स टू मच हेफ्टी गोल. 15-20 पेजेस आप एक दिन में कर सकते हैं. अगर 15-20 पेजेस कर लेंगे एक दिन में तो पूरी एनुअल मैगजीन 10 डेज में खत्म हो जाएगी. डोंट लुक फॉर शॉर्टकट्स गाइस. शॉर्टकट करोगे तो कंपटीशन नहीं निकलेगा. वेरी आई एम बीइंग वेरी ब्लेटेंट राइट नाउ बट दैट इज द हार्श ट्रूथ. ठीक है, कोई जादुई घुट्टी नहीं है मेरे पास जो मैं आपको पिला दूंगी एन मौके पर और आप बिल्कुल तुरंत खा बन जाएंगे. पर मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी. ठीक है. क्रिटिकल रीजनिंग कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं है. क्रिटिकल रीजनिंग एक पैटर्न है जिसमें क्वेश्चंस को फॉर्म किया जाता है. ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग क्या होता है, क्रिटिकल नहीं जाओ उसमें. टॉपिक्स को देखो क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, बस उन टॉपिक्स को कर लो. राइट, डोंट मेक इट टू कॉम्प्लिकेटेड. क्रिटिकल रीजनिंग में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं बस ये देखो. देखो वो क्वेश्चन, उस तरह के क्वेश्चंस तुम कर पाते हो कि नहीं. अगर कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हो तो प्रैक्टिस कर लो. इतना इतना ज्यादा परेशान होने की बात थोड़ी है. Ayush, that is mind blowing. Uh, Giving mocks and GK felt you're taking too much time. You can take 5 hours. Vicky, I'm not sure I understand what you're saying. After starting to revise the monthly compendium of initial months of the year, I get exhaustive because it's vast. Yes, it is vast. But there's nothing you can do, Devdrata. I know it is vast, I know it is boring, I know it is mundane and tedious. Same thing over and over again. This happening, that happening. Why do I have to know all of this? Well, you have to. That's the syllabus. So even if it is boring, just fight that part of the brain that asks you to stop and read a comics or watch a movie instead. Fight that part and continue reading. That's how you will be victorious and qualify this extremely difficult exam. Okay? I am speaking in English. Question answers, the students' personal questions I'm answering in Hindi. In CR practice, argument, assumption, inference over main ideas from GMAT book. See, Ayush has helped you already. All the students are finding critical reasoning complicated. Ayush has given us a solution. Inder and another student who wanted to rush me, I guess. So yes, that's what you can do. Argument, assumption, inference of main idea from GMAT book. Do that and you are sorted. Okay, so moving on. Now, how do you make concise notes? What exactly do you have to do? See, this is an extract that you can see. Can you see this extract? Can you read it properly? Can you read it? Is it clear to you? The pressure cooker was invented in the 17th century by the physicist Dennis Papin and works by expelling air from the vessel, trapping the steam produced from boiling liquid inside. This raises the internal pressures and permits high cooking temperatures. This together with high thermal, etc., etc. So they've explained an entire mechanism of pressure cooker, how things cook in pressure cooker. Right. Abhi, this is an entire extract. You are reading this, and let's assume that this is important for your exam.
and you need to write this stuff down for your exam so that you can remember it and revise it. How do you make it concise? Now you don't have to write everything. You can paraphrase it in the shortest form possible. How do you do it? Now, before we proceed, you should know that there's a test series. Everybody should subscribe to the test series. Students who are worrying too much about everything, ma'am, backlog here, wo. See, if you want to cover the backlog, reading is one thing definitely. But if you don't want to read, and if you're, it's getting impossible for you to cover the vast backlog syllabus, you can actually take GK tests. Take as many GK tests as possible and take them twice, thrice. That is also one way to cover backlog GK. Because when you take the question, you understand it, and when you mark the question wrong and then you know what the correct answer is, you'll always remember it. So this is obviously all the other sections also require practice. So do not make the mistake of not practicing enough. Take the subscribe to the series, practice as much as you can. Okay. Now, condense down to a format. Invention date written. Dennis Papin. You already know what you are talking about. So you don't have to rewrite everything in your own words. You're not writing an article. You're just writing down the basic, the bare minimum stuff that is necessary for you to remember. So what was the date? 17th century. Inventor was Dennis Papin. Cooks food two to four times faster than conventional boiling. Now, this is the importance. What is the mechanism in the bullet points? Air is expelled, steam from the boiling, liquid trapped inside, increased pressure caused by this and that causes thermal high heat transfer. Remember, pressure needs to be lower to open the cooker safely. This is an important tip. Now, just the entire passage, which has so many, at least 20-30 lines, and you concise it in 5 6 7 lines, and there you go. That this, if you have this kind of material ready or available for your access towards the end of the exam, trust me, nobody would be more confident than you are. अगर आपके पास इस तरह के नोट्स हैं एग्जाम के एंड टाइम पे, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, तो आपसे ज्यादा कॉन्फिडेंट और खुश इंसान कोई नहीं होगा, क्योंकि आप फटाफट रिवीजन कर लेंगे. और ये जो क्विक रिवीजन होता है कंसाइज नोट से, ये किस तरह का कॉन्फिडेंस और एनकरेजमेंट देता है मैं आपको बता नहीं सकती. हर बच्चा, स्पेशली द एग्जाम्स दैट आर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, साइंस एग्जाम्स, IIT JEE or PMT, the medical exam or the NEET, these students have two kind of notes. The first kind is the class notes that they prepare while they are studying, and from those notes they prepare revision notes which are utilized just the day before the exam. You need to do the same, because CLAT might not be as difficult as IIT and NEET, but it is as important as those two. The syllabus is different because, but it is not less. ठीक है, इसमें भी बहुत सिलेबस है और ये एग्जाम भी इजी नहीं है, तो इसकी तैयारी भी वैसे ही की जाएगी. या high level guide. Okay, you're talking about the book. You can Google it. Sandhu, you can find it on Amazon, buddy. Find it on Amazon. Any GMAT book will do. Any GMAT. Just find a book on critical reasoning. Amazon. Go to the Amazon, search for critical reasoning, and they'll give you 1,000 options. Go for the one which is rated the best by customers, which has the best customer review above 4. Buy that. Okay, but before you are buying, make sure that you speak with your faculty. Don't buy something which is out of your league altogether, something that makes you crazy. Oh my God, are these the kind of questions that I have to solve? So talk to your faculty before you purchase a book. It should be relevant from your exam point of view. GMAT is a high level exam. You might not really need the questions that are there in that exam. Okay, so don't make an uninformed decision. Oh.
Abhimanyu sir has a different CLAT coaching channel. What? Okay, so before we move any further, you guys should know that we are starting the last lap to CLAT 23. In this last lap, we would be covering the most important topics from all the sections, which would include international and family and miscellaneous also. In fact, we would be bringing forth to you the short videos containing some information that we find relevant for your exam. कुछ ऐसी information होती है which is there in the newspaper in a passing by manner, और which is just there an opinion, और कुछ ऐसा जो कि जिस पे discussion हो रहा है, or something that might be there in live law expressed as an article or an opinion. So we are trying to make an exhaustive uh, session or syllabus so that you can cover the maximum things possible towards the end or while you are preparing, revising. So this last lap is a power packed series which would have about 25 sessions. It would start from 5th of November at 9 p.m. YouTube. तुम लोग अपनी अपनी बात कर लो, मैं चली जाती हूँ. I can leave if you want. I can leave. I don't mind. मेरी क्लास तो जल्दी खत्म हो जाएगी. मैं तो वैसे ही बोल बोल के थक. Should I leave? Is it okay if I leave? Ayush, Sandhu, you are involved in your own small world. Okay. I'm here for you. I'm teaching you. Okay, all this effort, all these tips and strategies are so that you can do well. I've already qualified CLAT not once, twice. So it's really not for me. It's so that you also can do that. You can also get into the best national university. So by not paying attention to what I'm saying, you're sort of insulting me and humiliating the effort that I have put in this session. It doesn't feel good. Now, so last lap to CLAT 23, the last or the last minute sessions, we would be covering almost everything in these sessions. Almost everything, by everything I mean whatever topics that we are going to cover in this series would be the most important topics. Some topics that you might have missed because you might not understand what topics are the most important topics, but we would be covering the most important topics according to our analysis of the exam in the past year papers. They would be covered in the entire manner, like I would cover all four corners of that topic, and along with the concept clarification, we would also practice those topics. So immediately after I explain it to you, there would be a passage, there would be ALET questions, there would be CLAT questions, all the GK related questions. It is power packed for a reason. उसमें कोई भी कमी नहीं होगी, उसमें conceptual knowledge भी होगी, उसमें CLAT से related passage होगा, ALET के भी questions होंगे. उस information या उस टॉपिक से किस तरह के क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब लगभग कवर कर लिए जाएंगे, और उस टॉपिक के क्लैरिफिकेशन के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी साथ में ही करवा दी जाएगी. इतनी इंपॉर्टेंट और इतनी यूजफुल है ये सीरीज. इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 5th of November at 9 p.m. every day. The first session is mine. In fact, the first two sessions are mine. 5th and 6th, I would be teaching you something related to law. Now, there are many students who are finding miscellaneous, family, international very complicated and difficult. And you're always like, ma'am, how to cover at that, divorce, marriage. So I would be covering that also. Constitution also, some students find difficult. What to cover in Constitution? It is such a vast law. I would be covering that also. Now that we are doing it, do not miss the session. Okay, this is a revision series, and the revision notes that I'm talking about right now can be prepared through this series only. इतने ही topics कर लो तुम, उतने में तुम्हारा भला हो जाएगा. क्लैट तो क्वालिफाई हो ही जाएगा, ठीक है, लेकिन मन लगा के करनी है ये सीरीज, मन लगा के. इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इसमें कवर किया जा रहा है. साथ ही साथ में
शॉर्ट्स की भी एक सीरीज आएगी. There would be multiple short videos covering extremely important debates and opinions which might be there in your exam as passages. ठीक है, तो उसमें से अगर 2-3 पैसेज भी आ गए तो भाई तुम्हारा तो काम हो गया. ठीक है ना. तो मेक श्योर दैट यू आर देयर अटेंडिंग द सेशन एवरी डे एट 9 PM स्टार्टिंग फ्रॉम 5th of November. डू नॉट मिस इट. हाँ, लास्ट लैब का शेड्यूल रिलीज हो गया है. राइट नाउ after we are after we have understood how to prepare concise notes, you need to do something else also. You need to draw a timetable for your revision and then stick to it. सिर्फ notes बना लेना काफी नहीं है. It's not enough that you just prepare your notes, fancy notes with colored blue ball pen, pilot pens. You have used all colors, the rainbow notes, beautiful, and then you have kept them in the almirah, not using them at all. That's waste of time and a lot of energy. So when you are making notes, make sure that you are figuring out time also to revise those notes. So whatever notes you're preparing, you need to set a goal that this is the time when I will be revising the notes. जब भी नोट्स प्रिपेयर हो जाए तुम्हारे, तो एक दिमाग में एक रफली एक टाइम इंटरवल या फिर कोई भी ड्यूरेशन सेट करके रखो कि ये टॉपिक मुझे, जो मैंने आज जिसके नोट्स बना लिए, कोई भी सेक्शन क्यों ना हो, ये मुझे इस दिन पे इस टाइम पे रिवाइज करना है. एंड मेक श्योर यू आर डूइंग इट. इफ यू have an unpredictable life, for example you have too many curricular activities, or you are too much active in school, too busy with boards, you have that extreme pressure of doing as well in boards also, then try to make it a goal कि भाई मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं इसको कर लूंगा. लिख लो उसे कहीं पे, बड़ा बड़ा कहीं पे भी, जो तुम्हें दिखता रहे सामने कि ये मुझे पूरा करना है. एंड as soon as you do it, you put a tick on it. Okay, you put a tick on it. So this is what you're going to do. Now, the last lab to ALET has also started. ALET preparation, you can, the last lab to CLAT and the CLAT and the last lab to ALET both have started. ALET last lab will start from 6th of November. CLAT last lab will start from 5th of November. Now, set reasonable study targets that you know you can reach whenever, like, you know, you make too ambitious targets कि मैम मैं बहुत 10-10 12-12 घंटे पढ़ रहा हूँ. My question is, how much hours are you really, how many hours are you really devoting towards your study? I mean, you're sitting for 10 hours straight, but efficiently or practically or logically, how much time are you really giving to your study? And for how long do you feel distracted? Now, that is a question of fact. Every student has his or her own caliber, his or her own capability. You can sit for a limited number of hours, and you can only study efficiently by remembering. While you can remember everything, retain everything, understand everything, you can only do it for a certain amount of time. Every human brain is wired that way. You cannot do it for 72 hours straight. 72 घंटे तुम पढ़े जा रहे हो बिल्कुल, और तुम्हें सब याद हो रहा है, बिल्कुल पढ़ते जा रहे हो, और कोई तुम्हारे दिमाग में बैठा हुआ है छोटा सा प्राणी, और वो टाइप करता जा रहा है और वो सब कुछ छपता जा रहा है. ऐसा नहीं होता. ठीक है, एक कैपेबिलिटी होती है जहाँ पे एक बच्चा बैठ सकता है और उसी दौरान वो समझ भी लेता है, याद भी कर लेता है, याद रख भी लेता है और नोट्स भी बना लेता है. तो आप देखिए कि आपका वो ड्यूरेशन कौन सा है. अपने लिए वही गोल सेट करिए जिन्हें आप अचीव कर सकते हैं, और ये हर चीज को लेकर है. रिविजन भी, even if you're revising, set achievable goals. I have to revise this. I have to make revisional notes for this topic. But do not make them too ambitious. Do what you can do. Every child, every human being on this planet understands their capability. People might overrate you. People might give you too much accolade than you deserve. You know your reality. तुम्हारा क्या actual worth है, तुम वाकई कितना कर सकते हो, ये इंडिविजुअल लेवल पर सबको पता होता है. चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बूढ़ा हो, सबको पता होता है. तो ये बात तुम्हें भी पता होगी कि मैं इतनी देर पढ़ने के लिए बैठ सकता हूँ, मैं इतनी देर आराम से पढ़ लेता हूँ, याद भी रख लेता हूँ, नोट्स भी बना लेता हूँ, समझ भी लेता हूँ. बस उतना ही पढ़ाई करो.
उतनी ही टाइम रिविजन करो, उससे ज्यादा 1 मिनट के लिए भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट आप जितनी देर पढ़ रहे हैं आप वाकई पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसलिए आई नेवर आस्क माई स्टूडेंट्स टू गिव 4, 5, 10 hours टू देयर प्रिपरेशन, नो। गिव गिव द अमाउंट दैट यू कैन, that actually works for you. Wow. Wow, Ayush, that's amazing. Let's see how much it plays a role. I mean, the amount of time that you're giving, I have a feeling that you'll qualify with a rank, not an ordinary rank, single digit. ईश्वर करे ऐसा हो, आपकी मेहनत रंग लाए. You have a doubt about it? Go ahead, Srishti. You have made proper revision notes for legal reasoning, important topics like contracts, criminal torts, constitution. You'll revise them in the last week. Do I need to do any other things for legal? Yes, you need to attend the last lab series, Alfia. There might be few things that you might not have noted down. ठीक है, तो ये सेशन जो पूरा सीरीज चलाया जा रहा है वो इसलिए चलाया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, आपने रिवीजन के नोट्स बना लिए हैं। हो सकता है कोई टॉपिक्स आपसे छूट गए हों, हो सकता है कुछ टॉपिक्स को आपने ना कवर किया हो ये सोच के कि ये तो कहाँ ही पूछा जाएगा, इतना थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड पूछ लेंगे। तो सीरीज को अटेंड करिए, कुछ अगर रह गया है तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर ऑलरेडी नोट्स बना भी चुके हैं तो भी उस सीरीज को अटेंड करिए और फ्रेशन अप हो जाइए, ठीक है। Give your preparation and the revision, everything a final touch. That is the last thing that you need to do. बाकी हो गया तुम्हारा, बाकी there's nothing more that you can do. Practice करते रहो साथ में, जितना कर सकते हो, मॉक सेक्शनल टेस्ट जितना दे सकते हो उतना दो, ठीक है ना। बस इतना ही करो, बहुत बहुत अच्छा स्कोर आएगा आपका। सृष्टि, आई एम वेटिंग फॉर योर डाउट स्वीटहार्ट। हार्ड वर्क करते रहिए, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, राइट। तो मेहनत करते रहो, बस कर्म ही है तुम्हारे हाथ में, फल तो तुम एक्सपेक्ट और प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते, राइट। कुछ कंपटीशन एक्सट्रीमली अनप्रेडिक्टेबल है, बट ये मान के चलो कि तुम्हारी मेहनत कहीं ना कहीं रंग ले ही आएगी। क्लैट में नहीं लाई तो कहीं और ले आएगी, पर ले आएगी। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, राइट। ओके, मूविंग ऑन। You need to revise throughout the year by spending 15 minutes each day. लेकिन अब ईयर तो खत्म हो गया है, ठीक है। अब ये अगर 24 वाले बच्चे देख रहे हैं तो आपको हर दिन जो भी आपने पढ़ा है उसे रिवाइज कर लेना चाहिए। दैट इज द बेस्ट वे। इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, व्हाटएवर यू आर डूइंग, जस्ट रिवाइज इट। और वो बच्चे जो रिविजन भी कर रहे हैं टुवर्ड्स द एंड, द स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग क्लैट 23, even you guys should revise everything that you're doing every day. When you're going to sleep, right before your sleep, make sure that you study all that you did that day. It'll freshen you up, it'll give you encouragement, you'll feel more confident. A lot of positive things will start surrounding you if you make this exercise a regular habit. So whatever you have done for the day, whether it is mathematics, whether it is logical, English, whatever subject you did, make sure that you are revising it towards the end of the day before going to sleep. 15-20 minutes are not too much. You can definitely afford that, right? We have an all India mock test for ALET. The starting date is 5. It will be open from 5th of November till 12th of November. You need to attempt it. It's very important. Again, the same structure, the same idea as CLAT all India mock test. Competing with thousands of aspirants will give you an actual idea of where you stand. So students who have the dream of going to National University Delhi, this is an opportunity for you. Do not miss it. ठीक है, and do not make it a half-hearted attempt. Make sure that you are giving it with your full effort, right? Srishti, you need, I'll explain it in the last lab series. ठीक है, last lab series में समझा दूंगी मैं चारों रिक्स, अभी नहीं। यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी समझाना पड़ेगा। In the last lab series, I will explain them properly and I'll make you practice also. So that would be a better idea. तो जहाँ पे इतना वेट किया, थोड़ा 2-3 दिन और कर लो। सैटरडे एक ही दिन करना है, परसों है वीडियोस शुरू, ठीक है। यू नेवर नो, हो सकता है परसों का लेक्चर मैं रेट्स पर ही ले लूं, राइट।
So how do you take revision notes? To write revision notes that will help you as much as possible, you need to go over everything that you've learned so far. So going over your notes, all the materials that you have, if you have BYJU'S prep material, go over that. If you have any other coaching material, go over that. Read it once again, see what you can note down, see what you can remember, see what you might find difficult. Note down the most important stuff. Make sure that you are as concise as possible. You're writing the most important stuff only. You're not writing anything irrelevant. You're not writing anything that is not really required. You would be easily able to remember it. Bullet points में make sure आप लिख रहे हैं. Bullet points को बनाते जाइए. एक main heading bullet points, एक main heading bullet points, और इस तरह से आपकी जो revision notes हैं वो तैयार हो जाएंगे. Okay. अब स्टेप बाय स्टेप कैसे है? टाइप और मेक हैंड रिटन नोट्स फ्रॉम व्हाट यू हैव लर्नड इन क्लास. Even the last lab series that you guys are attending, make sure that you're writing the stuff down in your own words. Otherwise, you're not doing it justice. Second, make notes from textbooks. So the books that you are referring to, textbooks, I told you to read Indian Political Science from 11th, 12th NCERT. Go over or make sure that you have done them for your political science syllabus, and write the important stuff down and condense your notes down into a format which is understandable and easy. For example, this. So defining human rights. So you have written it in the bare minimum words possible. Human rights, this and this. Negative rights, positive rights. So this is a structure which is easily understandable. How much time will you take to read this? It will be very easy for you to read this and then remember this. बहुत आसान होगा तुम्हारे लिए इसे पढ़ना समझना. तो इसी को स्ट्रक्चर कहते हैं. एक ऐसे फॉर्मेट में स्ट्रक्चर कर लो अपने नोट्स को जो तुम्हें पढ़ते ही समझ आ जाए कि है क्या. राइट. कॉम्प्लिकेट नहीं करना है बिल्कुल भी. ओके. पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स बड़ा बड़ा लिखा. पार्ट 3 के नीचे आया फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स के नीचे आया आर्टिकल 12 to 35. 12 कौन सा आर्टिकल है? ये है. 13 कौन सा है? ये है. बुलेट पॉइंट्स में लिख लिया, बस हो गया. बस उतना याद रखो जितना तुम्हें याद रखने की जरूरत है, और उसी चीज को जो तुम्हें याद रखने की जरूरत है, जो तुम्हें बताया गया है कि ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, उसी को तुमने लिख लिया, अपनी वर्ड्स में लिख लिया. ये हो गए आपके हैंड रिटन रिविजनल नोट्स. देवदत्ता, दैट इज द रीजन व्हाई आई हैव स्टार्टेड दिस लास्ट लैब सीरीज. अब अपना जितना कर लिया उतना हो गया. जितना तुम लोगों ने कर लिया है उतना हो चुका है. अब इससे ज्यादा अगर कंफ्यूजन है तो फिर परसों का वेट करो. टॉर्ट, क्रिमिनल, कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन सब मैं कवर कर लूंगी. जो जो टॉपिक्स में कवर कर लूंगी, क्लास अटेंड करके उसके नोट्स तुम बनाते चलना. अपने आप हो जाएंगे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर. ठीक है ना. अब ज्यादा मेहनत करने की और बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि टाइम नहीं है. अभी तुम प्रैक्टिस करो, जस्ट प्रैक्टिस. डू नॉट मेक एनी मोर नोट्स अंटिल आई हैव स्टार्टेड माय लास्ट लैब सीरीज. इफ यू आर कंफ्यूज्ड, अगर कंफ्यूजन नहीं है, क्लैरिटी है बिल्कुल, तो बनाना शुरू कर दो. Okay, Devvrita. So these are some common questions that I'm being asked. What is the significance of taking notes? So there is no, if anyone, if anyone in your life ever tells you notes are overrated, throw him off the cliff. You cannot begin to fathom the importance and the role of notes in your preparation. Whatever you're doing, school, college, competition, नोट्स का सिग्निफिकेंस किसी भी तरह से काउंट ही नहीं किया जा सकता, एग्जामिन ही नहीं किया जा सकता, क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता. इतनी इंपॉर्टेंट चीज होती है नोट्स. ठीक है. पूरी मेहनत इतनी सी कॉपी में आ जाती है, वो इतनी सी कॉपी और पतली हो जाती है. पूरी मेहनत जो तुमने की एग्जाम के टाइम पे, उसे रिवाइज करने के लिए तुम्हें 20-25 मिनट देने पड़ते हैं, बस 1 घंटा 2 घंटा, और 1-2 घंटे में तुम अपनी पूरी मेहनत को पढ़ लेते हो. सोचो. तो ये इंपॉर्टेंस है नोट्स का. इसलिए नोट्स बनाए बिना पढ़ाई मत कर लेना, और अगर पहले से नहीं बनाए तो रिवीजन नोट्स बना लीजिए, एग्जाम के टाइम पे बहुत जरूरी है. Second, what role does repetition have in taking notes? It is critical in maintaining consistency and repetition of subjects, so to retain them. याद रखने के लिए बहुत जरूरी है. तो अगर पहले नोट्स बनाए जा चुके हैं तो भी उन नोट्स को पढ़िए, उनको भी कंसाइज कर लीजिए. उनमें से भी अगर शेप आउट कर सकते हैं रेलेवेंट स्टफ, तो उसे भी निकाल दीजिए. सिर्फ इंपॉर्टेंट स्टफ लिखिए रिविजनल नोट्स के फॉर्म में. ओके.
What is the most effective method of taking notes? The straightforward technique is to make sure that you are brief. Okay, so make sure that everything that you write is in bullet points. You're using minimum words possible. You are only using the simplest language possible. No difficult vocabulary, no complex figures of speeches, nothing hush, high, mighty, and literary rich, nothing. No. Make it in the simplest manner, in the simplest language, in the minimum words possible. That is how you make revisional notes. सबसे आसान अगर तुम्हें हिंदी इंग्लिश भी मिक्स करना है तो वो भी कर दो. अगर तुम्हें हिंदी इंग्लिश समझ आया है, जैसे मैं बोलती हूँ, आई मिक्स हिंदी एंड इंग्लिश टुगेदर, इफ दैट इज द वे यू फाइंड योर नोट्स टू बी मोर अंडरस्टैंडेबल, डू इट दैट वे, नो प्रॉब्लम. बट मेक श्योर दैट व्हेन यू रीड द नोट्स यू कैन गैदर एवरी बिट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू वांटेड द नोट्स टू कंटेन. नोट्स पढ़ते ही वो सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें मिल जाए जो तुम एक्चुअली चाहते थे लास्ट मोमेंट पे रिकलेक्ट करना. ये रोल होता है और इस तरह से नोट्स बनाने चाहिए, right? So that's it for today, guys. I hope you found this lecture helpful and useful. Note making is an art and they are more useful than one can imagine. So make sure that you're doing that. Make sure that you're attending all the sessions of the last lab series. Do not miss a single session, because if you do, you might have a disadvantage. The topics, again, I'm emphasizing the topics that are being covered are the most important. You need to attend those sessions. The sessions would be about 90 minutes. हर सेशन लगभग 1.5 घंटे का होगा. 1.5 घंटे में तुम क्या क्या पढ़ सकते हो तुम सोच भी नहीं सकते. सारे मस्ट डू इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे. सभी लॉस को जो इम्पोर्टेंट है, जो तुमने नहीं पढ़े होंगे, इंटरनेशनल भी, मिसलेनियस भी, इनफैक्ट हिंदू के भी कुछ आर्टिकल्स, सभी कुछ कवर कर लिया जाएगा. इसीलिए ये लास्ट लैब सीरीज आपको अटेंड करनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, और करते करते आपको नोट्स भी बनाने, राइट? So everybody, that's it for today. Thank you so much. Like the session, subscribe to our channel if you haven't already. I would love to see your comments on my session. Share it if you want. You can also follow us on Instagram and you can like us on Facebook. You can join our Telegram channel and you can download our app from the Google Play Store. Take care. Good night. Thank you so much. Bye bye, guys.